हैं बालकृष्ण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी है, तो बहुत सही दिन है आपको यहाँ पर चैनल पे इनवाइट करने का। इंडिया की अगर बात की जाए और सेक्टोरल यहाँ पर आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। इंडिया वर्ल्ड में सिक्स सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, 8th सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। जिस तरह से इंडिया में हमने कॉफ़ी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनाता हुआ देखा है, आप कैसे देखेंगे ईयर ऑन ईयर यहाँ पर प्रोडक्शन में इंक्रीज, कंजम्पशन नंबर्स, और कैसे देखते हैं आप एक्सपोर्ट्स के नंबर्स? Thank you. And first of all, I would like to congratulate you all and happy International Coffee Day. And very nice to to present here on a Coffee Day, International Coffee Day. Good. See, as you mentioned that year on year there is a coffee consumption is increasingly growing. And typically in India there is a growth. Phenomenal growth is there. If you see the last 3 to 4 years time, there is a growth of around 7 to 7.5% growth is there in the coffee. And Indian coffee also, the output of the coffee also slowly increasing now. Now it is around 300,000 metric tons. Now it is going to increase further. And India is the sixth largest producer of the coffee in the world compared to the other countries like in Brazil, Africa, Indonesia, Vietnam, and all this. So India is also stands in a top positions and really focus more on this. And because every day there is a trend changing, people are moving from slowly to the coffee, and coffee consumption is increasing now. Yes. सादी, आप ये भी कहेंगे कि प्रीमियम कॉफ़ी कंजम्पशन भी हमने यहाँ पर बढ़ते हुए देखी है। आप रिसेंटली आपने यहाँ पर एक प्रीमियम कैफ़े लॉन्च भी इस्टेब्लिश किया है, लॉन्च किया है। कैसे देखते हैं आप उसके लिए कंज्यूमरशिप? Suddenly there is a change in the trend in Indian market. Actually, Indian consuming the behaviors is completely changing, and all people slowly moving in a much faster way. Actually, what we expected is growing in a much faster than what our expectations are there. So there is a good, because typically India is a young country. You know that, as we are everybody aware that, and the youth and the young generations moving towards the coffee, and the coffee outlets are coming up, coffee shops are coming up, and we have opened up a coffee shop in fact, and there is a trend moving towards the coffee, like a Starbucks and other coffee companies. So there is a demand for that. हम्म, साथ ही साथ ऑफ कोर्स एक तरफ कैफेज का यहाँ पर काफ़ी प्रचलन बढ़ा है, दूसरी तरफ हमने देखा है कि ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स की तरफ से भी काफ़ी सारी कमोडिटीज़ यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड यहाँ पर भी आते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन डिमांड के तरीके? See, it is typically now e-commerce is focusing more on that one, and everybody actually people are now going through the e-commerce and trying to search and find out the best coffee quality and whatever is. So we are now more focusing on e-commerce and as well as the coffee, and that is going to be happen in a coming years. Is going to have a big impact on the marketing strategy, especially because it is going to give a big boost to the coffee. Segment, especially in a e-commerce segment, and also building a brand and all will take little time, but actually e-commerce is moving much faster than what we expected. एब्सोल्युटली। मिस्टर बालकृष्ण, आप जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ सालों में 7 से 7.5% की डिमांड ग्रोथ हमने आते हुए देखी है। कॉफ़ी के प्राइसेस लगातार ऊपर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कॉफ़ी प्राइसेस को लेके, मल्टी ईयर हाइज, फिर किसी दिन 4 से 6% की गिरावट भी इंडियन मार्केट्स के तौर पर। कैसे देखते हैं आप प्राइस मूवमेंट यहाँ से? See, as Indian coffee, typically as Indian coffee has a lot of uniqueness. I would like to. I'm not really exaggerating, but Indian coffee has the best coffee. I feel that compared to the other coffees and all. So it has some unique qualities are there, and because maybe it is because of the origin, or maybe because of that, and there is some premium price we are getting from Indian coffees. There is no doubt about it. And of course, compared to the world coffees and other countries like Vietnam, Indonesia, and Africa and other countries. So, okay, Indian coffee prices are slightly higher than the other countries, and there is the good taste profiles and all. So, I think there is a widely accepted, and people like the Indian coffees, and that is why there is a huge demand for the Indian coffees now. ऑलराइट, एक फाइनल क्वेश्चन देन मिस्टर बालकृष्ण, आगे जाकर अब यहाँ पर किस तरह की प्रोडक्शन इंडियन मार्केट्स में है? बिकॉज जहाँ तक नंबर्स हैं जो हम देख रहे थे, कॉफ़ी बोर्ड के नंबर्स, वहाँ पर प्रोडक्शन में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर? Now, this is all depends upon again climatic condition, environment, and all basically. But now the coffee board and the government of India is putting a lot of efforts to increase the coffee output. And typically, India, that as that is a 2.6 billion dollars of coffee market is there, and it is growing by, as I mentioned, 7 to 7.5% growing. There is a huge sizable demand is that.
I'm sure that it will definitely. It depends. Again, there are the areas which is untapped areas are there in India, especially for coffee cultivation. So see that you see in Andhra Pradesh, if you see that there is Araku, there is it has the area, it's a huge potential for the coffee growing. And Karnataka and Wayanad and other Tamil Nadu, some regions in Kerala and Northeast. So there is a huge demand for that. I think the government of India is really taking initiatives. I'm sure that output will increase phenomenally in coming years. ऑल राइट मिस्टर बालकृष्ण दादी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो क्लियरली $2.6 बिलियन की यहाँ पर एक मार्केट है, 7 से 7.5% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। और जैसे मिस्टर बालकृष्ण जी हमें कह रहे थे कि इंडियन कॉफ़ी के प्राइसेस थोड़े से हायर हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत बेहतरीन है और क्लियरली उस वजह से यहाँ पर प्रीमियम भी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर